Hello guys, welcome back to the channel. So current electricity part 2 আজি କରିବା लास्ट वीडियोटा जोटे एंड करथले सेटो ही स्टार्ट करिया फर्स्ट हमर टॉपिक अछि डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स एडा वेरी इंपोर्टेंट अटे ओके वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम So ohmic conductors कोड़ा कहवा the conductors who obey Ohm's law are known as ohmic conductor and the conductors who don't obey Ohm's law are known as non-ohmic conductors. Okay. Ohmic conductors ra examples होची iron, aluminum, silver, gold. Basically the metals are ohmic conductors. Vacuum tubes, transistors, electrolytes are non-ohmic conductors. Okay. एग्जाम्पल गुड़ा मन रखिया को मन रखले तमे डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स रे गोटे पॉइंट करी लिखि परियो ओके नेक्स्ट पॉइंट कोन VI ग्राफ V होची पोटेंशियल I होची करंट माने पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन ओके ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन एंड VI ग्राफ इज लीनियर एक सरल रेखा ओरिजिन दे पास करथुवा ग्राफ टे आसीओ non-ohmic ପାଇଁ କଣ ଆସିବ it may or may not pass through origin it may or may not pass through origin and VI graph is non-linear okay माने गोटे कर्व ହେଇକି ଆସିବ right next हमरो very important topic that is Kirchhoff's laws first हमरो Kirchhoff's first law जोटा कि हमें Kirchhoff's current law बोली भी कहता हूँ Kirchhoff's current law कौन है स्टेटमेंट लिखिबा एक्सप्लेनेशन लिखि देबे ओके Kirchhoff's law ऊपर हमर सेपरेट वीडियो हो जाईची जो थरे डिटेल एनालिसिस हिची एठी हमें ओडे ब्रीफ कांसेप्ट हम केवल कहि देबी जोटा कि तुमको वन शॉट रिवीजन पे इजी होबो ओके Kirchhoff's फर्स्ट लॉ होची Kirchhoff's current law स्टेटमेंट कौन होची it states that the algebraic sum of current meeting at a point in an electric circuit is 0 mathematically summation of I which stands for current is equal to 0 okay explanation it लिखा है जी कौन ना consider 5 conducting wires through which current I1 I2 I3 I4 and I5 are flowing through junction O ये point O देगी पांचटा connecting wires पांचटा conducting wires connect कराई जी और तांका मध्य देगी I1 I2 डॉट I5 जाए करंट फ्लो करछि पांचटा इच तार रे ओके रेजिस्टेंस भी मु लिखि देछि at junction O I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0 एटी तमे क्वेश्चन कर परियो मु I1 और I2 को पॉजिटिव नेउछि I3 I4 I5 को कहीं नेगेटिव नेउछि तो एठी कोन आसे ना हमर साइन कन्वेक्शन तुमको गोटे साइन कन्वेक्शन नबाक पड़ियो जे तमे इनकमिंग करंट को पॉजिटिव नबो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव नबो और वाइस वर्सा ओके तमे तम कन्वेक्शन हिसाब रे साइन कन्वेंशन कर परियो मु एठी नउची इनकमिंग करंट को पॉजिटिव बट तमे चाहिले इनकमिंग करंट को नेगेटिव भी नहीं पारियो ओके देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट so mathematically I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5 एठो हमो को जाना पड़ची ना incoming current is equal to outgoing current so the current at the junction O is 0 okay एठी नोट कोन ना Kirchhoff's current law which is the Kirchhoff's first law obeys the principle of conservation of charge okay एटा शॉर्ट क्वेश्चन तमरो आसी पारियो it's a good short question okay Kirchhoff's current law obeys the principle of conservation of charge right then आछे हमरो Kirchhoff's second law जहा को के हमें Kirchhoff's voltage law बोली भी कहि थाउ it states that in a closed circuit the sum of EMFs is equal to the sum of products of resistances and currents flowing through them
ओके हमको कौन कहला मैथमेटिकली समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ्स ईएमएफ्स विषय रे हमें पढ़िथिले से ईएमएफ्स रो समेशन टा कहा सह समान हबो ना करंट और रेजिस्टेंस रो समेशन सह समान हबो if there is no EMF in the circuit then summation of E is equal to 0 so summation of IR is equal to 0 too okay एठी हमें गोटे सर्किट नहीं छे कॉम्प्लेक्स सर्किट अछि एठी आउ एठी मन रखियार अछि जे किरचॉफ सेकंड लॉ टा हमें लूप रे नै थाउ गोटे करंट लूप पई किरचॉफ सेकंड लॉ टा वैलिड हेता है एठी इन लूप ABHG ये जो फर्स्ट लूप टा ABHG एठी हमें नोटिस करिया I1 R1 एठी गोटे पेयर I3 R3 एठी गोटे पेयर एंड I2 R2 ओके यांको भीतर रिलेशन को हो एठी देखो लूप रे कोनोसी प्रकार ईएमएफ कनेक्ट हेई नाही तो आमे एठी कोन करबा ना गोटे डायरेक्शन बाछिया एंटी एंटी क्लॉकवाइज हो किबा क्लॉकवाइज हो डायरेक्शन अनुसार जोगुडा गोटे डायरेक्शन रे थिबे ताको गोटे साइन आ जोड़ा ऑपोजिट रे थिबे ताको आउटे साइन दबा ओके एठी I1 R1 को मु पॉजिटिव नोची I3 R3 को नेगेटिव पॉजिटिव नोची और जेहेतु तो I2 R2 एई दि जनक अपेक्षा भिन्न डायरेक्शन रे अछि तेनु ताको मु नेगेटिव नोची इज इक्वल टू केते हिजो ना 0 because there is no EMF in this loop meanwhile ADEF loop रे हमें जदी देखिबा ADEF ओके ए लूप टा जदी हमें देखिया एठी कोन होची ना एठी I2 R2 करंट रहउची आउ I5 R5 करंट रहउची जोटा कि दिटा को गोटे डायरेक्शन रे अछंती दिटा को पॉजिटिव नै छी मु and EMF join होईची एतरे कते E1 plus E2 plus E3 okay that's how we apply Kirchhoff's second law which is also known as Kirchhoff's voltage law हैला एठी नोट कोन कहूची Kirchhoff's second law obeys principle of conservation of energy right Kirchhoff's law तमरो लॉन्ग क्वेश्चन आसपारे ओके लॉन्ग क्वेश्चन आसपारे जोथरे कि तुमको दीटा को लॉ को एक्सप्लेनेशन मागी पारे आ ता सहित गोटे न्यूमेरिकल ऐड कर पारे किबा व्हीटस्टोन ब्रिज रो कांसेप्ट ऐड कर पारे आइदर नहले शॉर्ट क्वेश्चन आसपारे जोथरे कि से तुमको गोटिए लॉ विषय पचार पारियो जेमति कि व्हाट इज केवीएल और व्हाट इज केसीएल नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जोटा कि हमरो 1 मार्क पई आसपारे 1 मार्क और एमसीक्यू सेथरे कोन आसपारे ना किरचॉफ सेकंड लॉ obeys which principle कौन observe conservation of energy Kirchhoff's first law obeys principle of conservation of charge right एटा हमर very short question रे भी आसी पारे आ एटा को fill in the blanks रे भी आसी पारे किछ भी आसी पारे true false आसी पारे ओके next हमर आसीबो Wheatstone bridge which is also a important concept okay Wheatstone bridge Wheatstone bridge रो तुमको डायग्राम टा मन रखियार अछि हला डायग्राम टा मन रखि देले तमे एको एक्सप्लेन करिके आराम से लिख परियो डायग्राम मन रखियार अछि और केवीएल केसीएल को अप्लाई करियार अछि एटा भी सेपरेट वीडियो रे अछि तमे जेकी ताकू चेक कर परियो फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पाई ओके एटी केवल ब्रीफ आइडिया टा मु दोछि द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस PQ RX connected in four arms of a square ABCD out of which X is unknown okay ABCD होची एठी गोटे स्क्वायर टे ओके तार चारटा जाका आर्म रे हमें चारटा रेजिस्टेंस नीचे PQ R and X नेक्स्ट कोन कोची X होची हमर अननोन रेजिस्टेंस X होची अननोन रेजिस्टेंस one EMF E is connected across A and C across the point A and C next a galvanometer is connected across B and D okay एठी गोटे galvanometer टे connect हेछि this sign is a galvanometer galvanometer रो वर्क कोन galvanometer shows the direction
and presence of small amount of current. Very small amount of current ପାଇଁ ଆମେ galvanometer को use କରିଥାଉ। ओके, galvanometer ବିଷୟରେ ଆମେ next chapter ରେ full detail ରେ ପଢିବା। ओके, one EMF is connected and galvanometer is connected across B and D. Okay, এটা গলা। Let I1, I2, I3, I4 and IZ are the current passing through P, R, Q and X and the galvanometer respectively. I1 pass করছি কাহা দে P দেই pass করছি, I2 pass করছি Q দেই, I3 pass করছি, sorry, I2 pass করছি R দেই, I3 pass করছি Q দেই, I4 pass করছি X দেই, IG হচ্ছে galvanometer ପାଇଁ। Okay, and Rg is the resistance offered by galvanometer. Rg is the resistance offered by galvanometer. Now applying Kirchhoff's law, तमे डायग्राम टा खातारे कर देले एठी मु इक्वेशन गुडा जेमति लिखि तमे चेक करी करी जिवो। Now applying Kirchhoff's first law to the junction B and D, we get I1 is equal to I3 plus Ig and I2 is equal I2 plus Ig is equal to I4, which will be equation 1 and 2 respectively. When the breeze is balanced, Ig is equal to 0, means no deflection in the galvanometer. This is what known as Wheatstone breeze condition. Sorry, special condition of Wheatstone bridge, when there is no current passing through the middle arm. See, एटी मिडिल आर्म रे आमे जो गाल्वानोमीटर देजे व्हीटस्टोन ब्रिज रो स्पेशल कंडीशन रे कौन हबो ना एई मिडिल आर्म दे कोनोसी करंट पास करिवनी, सो दैट गाल्वानोमीटर दे हमर कोनोसी डिफ्लेक्शन शो करिवनी। when the breeze is balanced, okay, आमे तार कंडीशन टा काढिया केमती ना, सो इन balanced condition I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4 and Ig is equal to 0। जेहेतु गाल्वानोमीटर दे कोनोसी करंट पास करूनी, सेठी आमे कोन लिखिबा ना Ig is equal to 0, कारण Ig होची हमर current passing through galvanometer. Now applying Kirchhoff's second law to the loop ABD, I1P plus IGRG minus I2R is equal to 0. Because Ig होची हमर 0, ए टर्म टा पूरा ही 0 ही जिवो, and we will get an equation like this which says that I1 by I2 is equal to R by P, which will be our equation 5. Similarly, applying Kirchhoff's second law to loop BCD, loop ABD रे अप्लाई कले loop BCD रे अप्लाई करिया, आमे कोन पाइबा ना I3 by I4 is equal to X by Q. From the equation 3, 4 and 5, 6, we will get I1 by I2 is equal to I3 by I4, which means R by P is equal to X by Q and P by Q is equal to X by R. This is the case for balanced Wheatstone bridge, when there is no current is passing through the middle arm. Okay, if X is the unknown resistance, आमे जदि X टा unknown resistance नुचे तार वैल्यू आमे केमति काढिबा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कले PR by Q, एटा हमर न्यूमेरिकल पई आसी पारे। न्यूमेरिकल रे तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज रा स्ट्रक्चर देथिवो, तुमको तार इफेक्टिव रेजिस्टेंस काढिबार अछि, जोटा कि गोटे सेपरेट वीडियो रे आसी जिवो। ओके, नेक्स्ट हमें पढिया गोटे डिवाइस विषय रे which is known as a cell. Okay, a cell is an electric device, sorry, an electric cell is a device that helps to generate electrical energy. Simply a battery. A battery is an example of a cell. Okay, next हमें कौन पढ़िया ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जेहेतु सेल टा गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये भी करंट को किछिटा अपोज प्रोवाइड करिवो, ताकू ही हमें कौन कहया ना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। The resistance offered by electrolyte and electrodes of a cell when electric current flows through it is known as internal resistance of a cell.
तमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स विषय रे केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विषय रे बहुत ही डिटेल रे पढ़ियो दरकार पड़ले फिजिकल केमिस्ट्री रो वीडियो में मु पोस्ट करी देबी ओके जो थे तुम एटा को देखि पारियो it depends upon the nature of electrolyte and electrodes distance between the electrodes and area of electrodes immersed in the electrolyte या विषय आम पर डिटेल वीडियो रे देखिया ओके सेल्स इन सीरीज जमती आम रेजिस्टेंस को सीरीज रे कनेक्ट करथिले कैपेसिटेंस को सीरीज रे कनेक्ट करथिले सेमती सेल गुडा को जदी मु सीरीज रे कनेक्ट करछि ताले तांकर इंटरनल रेजिस्टेंस रो वैल्यू केमती आसीबो सेटा हम एठी देखिया cells in series कौन हला now consider n numbers of cells connected in series across two terminals of an external resistance r r टा एठी हमर गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हेची आ किछिटा सेल n नंबर ऑफ सेल्स मोडी कनेक्ट करछि सीरीज रे जो मानकर की इंटरनल रेजिस्टेंस कते r let E is equal to EMF of each cell, R is equal to internal resistance of a cell, then net EMF केते हिजो NE okay series रे कनेक्ट हिजी तो इंटीग्रल मल्टीपल NE right net resistance केते हिजो NR very simple total resistance of the system केते हिजो net internal resistance plus net external resistance net internal resistance केते हला NR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें केते प्रोवाइड करछे कैपिटल आर राइट तो एति की हिजो हमर टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम thus करंट कोन नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस नेट ईएमएफ हमर एति की एनई बाय आर प्लस एनआर नेक्स्ट हमर आसीबो स्पेशल केस इफ आर माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज lot smaller than internal resistance then we can ignore the external resistance right then I रा value केते आसीबो E by small r if the vice versa उल्टाटा जदी हबो external resistance जदी internal resistance अपेक्षा अधिक होई जिवो I रा value केते आसीबो Ne by capital R okay सीरीज पई देखले सेमती एबे हमें पैरेलल पई देखिया सेल्स इन parallel केमती ना n number of cells in connected in parallel एठी parallel रे कनेक्ट हिचंती आ तांको मु एठी ओटे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करबी कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R ओके कोन कहला R होची हमर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होची इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स and EMF of cells होची कैपिटल E now total internal resistance केते हिजो 1 by r dash is equal to 1 by r plus 1 by r n times तो r dash केते हिजो small r by n right total resistance of the system केते हिजो external resistance plus internal resistance that is capital R plus small r by n एटा हिजो हमरा total resistance of the system so current केते हिजो net EMF by net resistance which is I is equal to E by R plus R by N. Special cases kono if external resistance is much greater than internal resistance then we can ignore the internal resistance thus current I is equal to small capital E by capital R and if R capital R is lot smaller than small r then I is equal to Ne by small r नेक्स्ट हमर आस जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किछि नहीं केवल स्टेटमेंट ही यार इंपोर्टेंट H is equal to I square RT right where I is current flowing through the conductor R is equal to resistance of the conductor T is equal to time flow of the current where H is the amount of heat produced amount of heat produced okay first law kono koibo H is directly proportional to I square where R and T are constants
माने रेजिस्टेंस आउ करंट फ्लो रो टाइम टा कांस्टेंट्स रहले इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. सेकंड लॉ, when current and time is constant, then heat is directly proportional to the resistance. Resistance बढ़ले heat बढ़ियो, right? Resistance कमिले heat कमियो. Time, time सहित vary केतेବେଳେ करियो? Now when current and resistance are constant, then heat is directly proportional to time. जेते time जाए current flow करियो, सेते time जाए heat बॉडी बॉडी चली थिबो. Okay. So next ଆମର ଆସିବ electrical power, which correlates with electrical energy, and these two are our last part of the video. So electrical power kono na, the rate at which work is done for maintaining the electric current in an electric circuit is known as the electrical power of that electrical circuit. Simple kada. The SI unit of electrical power is watt, and the formula is given here, which is P. P stands for power, electrical power, which is equal to W by T, where W is equal to the work done and T is equal to the time. Okay. W by T को हमें simplify करें VI, और V जगह रे हमें IR पकड़े I square R, and I square R को हमें लिखी बारे V square by R. Okay. एटा केमती होची हमरो V is equal to IR रो ही हमें सब रिलेशन एटी काढीचे, right? Next, electrical energy, the total work done by the source of EMF in maintaining an electrical current in a electrical circuit is for a given time is called electrical energy. माने से जो वर्क डन हला से वर्क डन करिया पई हमरो से वर्क डन ही होची कोन एनर्जी टा वर्क रे कन्वर्ट होची, तो एनर्जी जहाँ से वर्क डन टा भी सेया ही अटे. So electric energy W is equal to PT. PT P power जगह हमें formula पके दवा VI और I square RT, right? Next, energy रो हमें जानी चाहिए unit होची joule. So 1 joule is equal to 1 volt into 1 ampere into 1 second. एठो आछि V रो volt, I रो ampere and T रो second. ये जो टर्म टा रहउची 1 वोल्ट into 1 एम्पियर ता बदल रे हम लिखि परिया 1 वाट. वाट तमे सुनिथिबो होची हमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निर्णय करिया पे वाट रो व्यवहार करा जाय 1 किलोवाट आवर, राइट? 1 किलोवाट आवर केते 3.6 into 10 to the power 6 joule. 1 watt hour is known as 3.6 into 10 to the power 3 joule, which is called as 1 unit. 1 unit टा कोन ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रे केते परिमाण रो इलेक्ट्रिसिटी करंट खर्च होची सेटा को हमें केते मापि थाउ यूनिट रे, ता हिसाब रे ही हमरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आसी थाए, राइट? एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. भिडियोटी भल लागले लाइक करिवो, कमेंट करिवो और शेयर करिवो, चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो. सी यू इन द नेक्स्ट